Welcome everybody. We'll complete take on one more chapters of class 7 NCERT. तो NCERT रो हमें मझे मझे क्लास करूचे आज NCERT रो मेजर होची चैप्टर 3 जोटा रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ऊपर अच्छी सो बेसिक फैक्ट्स गुरा क्लियरेंस पे NCERT बहुत आवश्यक सो विल स्टार्ट द सेशन ओके NCERT class 7 part chapter 3 ro. Before that, look at article 41. The laws of the Supreme Court is binding on all courts in India. Article 141 re kochi judgment of Supreme Court by laws declared by the Supreme Court are binding on all courts. But remember, it is not binding on the Supreme Court. Supreme Court उपरे सेटा बाध्य न कारण से चेंज करि परिबे किंतु तांको द्वारा घोषित सब नियम कानून गुड़िक भारतर सबु कोर्ट ट्रिब्यूनल समस्ते मानिबा को बाध्य किंतु से निजे मानिया पे बाध्य न कारण तार अर्थ कोन से चेंज करि पारे सेतबे कुआ जे इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन हिम ऑन इट ठीक अछि आरंभ करी हमें तो बिफोर दैट इट्स वेरी इंस्पायरिंग कोट टुडे never confuse a single defeat with final defeat. Scott Fitzgerald. Never confuse a single defeat with final defeat. Defeat or success, road connectivity by जो distance between success and defeat is a misnomer. There is no distance between success and failure. Failure is a part of success. So never accept the defeat. Rather welcome the defeat. ठीक है ना जीवन रो सबुटर बड़ा कथा हला कि पेशेंस परसिवरेंस मेंटालिटी एटा दरकार ठीक अछि तो आरंभ करबा हमें आज रो सेशन रे माने इतने हमरा बेसिकली तो हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स अच्छी स्टेट गवर्नमेंट्स जोटा हमें कहूचे फेडरल गवर्नमेंट रो गोटे पार्ट स्टेट गवर्नमेंट भी गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एवं पार्ट 5 जो पार्ट 6 रो रे स्टेट गवर्नमेंट अच्छंती एवं तार भी एग्जीक्यूटिव अच्छंती लेजिस्लेचर अच्छी जुडिशियरी भी सेपरेट जदियो नाही किंतु जुडिशियरी अच्छी तेणु एग्जीक्यूटिव आ जो कहूचे हमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एटा स्टेट गवर्नमेंट अच्छी गवर्नर हैला गवर्नर जोटा हमें कहूचे गवर्नर इज द गवर्नर होची हेड ऑफ द स्टेट तापरे चीफ मिनिस्टर होचंती हेड ऑफ द गवर्नमेंट and the council of ministers are there to assist the chief ministers and the state have a state legislature also. There is a state legislature and state legislature India re bicameral achi unicameral achi. So what are the government works? State government works जो हमें पढ़ुचे state governments basically functions on the to deliver health आउ जो कौन एजुकेशन बा जो पुलिस बटर हला कि हेल्थ हला कि एजुकेशन हला जो बेसिक नीड्स गुरा बेसी स्टेट गवर्नमेंट ऊपर दिया जाए तो सेटा सेति पई दिस चैप्टर डील्स विथ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स तो एठी विभिन्न प्रकार वाटर शॉर्टेज जेम देछि ओटे डिस्कशन रे वाटर शॉर्टेज एरिया एंड सेटा ओटे मेजर कांसेप्ट देछि okay so this is looked at work local governments we examine work of the government at the state how does this take place in a democracy what is the role of member of legislative assembly and how do people express their views demand actions okay these are the parts is given
So that is there, and एथिरे विभिन्न प्रकार दिया जाइछि कि सरकार रो जो बेसिकली जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव actually discuss the following terms with the teacher: public meeting कौन states in India, constituency, majority, ruling party, opposition. So गोटे concept clearance ପାଇଁ एटे chapter गुरा बहुत help करिवो जो माने पॉलिटी रे न्यू थांती समान को एटा बहुत help करिवो कि ruling party कहा कुआ जाए, constituency कहा कुआ जाए, opposition कहा कुआ जाए, majority कहा कुआ जाए. So today MLAs represent people. Every state in India has a legislative assembly. It is the ठीक कथा. जदियो every state does not have legislative council, but every state has legislative assembly. Every state is divided into different areas and constituencies. For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly. In Odisha, it is 147. And these areas are called constituency. These are constituency. The people elect one representatives because there is a single member constituency. You would have noticed that people stand elections in the name of different parties. These MLAs therefore belong to different political parties. So different political parties ro thanti MLAs mane boli kohuchi. How do people who are MLAs become ministers and chief ministers? The majority party जो हमें जानी चाहिए majority party जो party रो जो MLA माना जो MLA रो political party has majority in the assembly that forms the government. तो सेटा से केमती पिलान को clearly बुझाउची केमती clearly वेरे NCT रे कुहाउची कि political party, a political party whose MLAs have own more than half the number of constituencies in a state can be said to be a majority. The political party that has the majority is called the ruling party, and all other members are called opposition. Now, a ruling party is a party which has majority in the assembly. So very simple definition केमती हमें देखी पड़े कि simple definition केमती NCT रे आसुची. The legislative assemblies of the state of Himachal has 68 MLAs. तापर प्लाने इतने देची results of the assembly election in Himachal Pradesh रो example 2017 रो उटे देची कि इतने 44 रखी BJP, 21 National Congress, Communist Party, 1 independent who do not belong to any party. Independent माने who do not belong to any party. That is called independent. Candidates from various political parties, 44 MLAs had the majority. ता माने BJP had the majority. So पिलानु केंति clear way रे बुझा जाउची जो माने non polity background रो अछंती से माने 7 6 रो बही पढिले से माने को polity रो फाउंडेशन पई ताको बहुत इश्यू होबनी. तो सेटा बेसिकली हमर दरकार हुए कारण हमें सेटा को लेखिबा पई प्रॉब्लम हुए. तो सेटा देखिया दरकार among the oppositions were other parties including those who had been elected as independent candidates. Okay, third dechi the head of the state is the governor. He or she is appointed by the central government to ensure that state government works within the rules and regulations of the constitution. Find the number governor of your state. After the election, MLA belongs to the ruling party will elect their leader who will become the chief ministers. In this case, BJP MLA choose Sri Jairam Thakur as their leader and became the chief minister. The chief minister then selects other people as minister. After the election, it is the governor of the state who appoints the chief ministers. So who appoints the chief minister is governor. The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments. They have separate offices. A legislative assembly is a place where all MLAs, whether from ruling party or the opposition party, meet to discuss various things. Hence, some MLAs have dual responsibilities. What is the dual responsibilities? Some MLAs have dual responsibility means one as an MLA, another as a minister. Okay. So, some MLAs have dual responsibility means some out of the MLAs, some becomes ministers, chief ministers, so they have dual responsibility. So the executive ruling party may not be a single party. At times,
The ruling party may not be a single party but a group of parties working together. This is called coalition. So coalition is a pre-election coalition or post-election coalition. तो ये सब विषय पिलाମାନଙ୍କୁ केमती सम्यक धारणा दिया जाइछि कि जदि गोटे पार्टी न होइतिबो अन्य पार्टीर समाहार हैला गोटे कोआलिशन पार्टी एवं सेटा प्री इलेक्शन कोआलिशन ही पारे माने इलेक्शन पूर्वरु कोआलिशन ही पारे नॉल इलेक्शन परे भी कोआलिशन बनी थाए तो सेटा पिलाମାନଙ୍କୁ बुझी दिया जाइछि केमती कोआलिशन कोन रहि जाय ठीक अछि तापरे Prince Sujata, many other students from their school traveled to the state capital to visit the Legislative Assembly, which was housed in an impressive building. The children were excited. After security checks, they were taken upstairs. There was a gallery from where they could see the large halls below. There were rows and rows of desks. This assembly was going to have a debate on a current problem. During these times, MLAs can express their opinions and ask questions. The first duties of MLA is to express his opinion and ask questions related to the issue and give suggestions. Number 3, he can give suggestions. What should be done by the government? Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. So what are the functions of an MLA? Set out a major points. The chief minister and other ministers have to take decision and run the government. We usually hear about them to see them in news channels or in papers. However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the Legislative Assembly. Okay, so these are the procedure. Vanita, good evening. These are the procedure where in the assembly it is followed. So that is clearly about easy way in a democracy. These members can ask questions, debate an important issue, decide whether money should be spent. They have the main authority. Okay. So MLAs तो एटी गोटे माने डिस्कशन दउची केमती असेंबली रे क्वेश्चन आंसर करा जाय इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. I would call the attention of the minister in charge of health to take immediate measures to control the situation. MLA 1. MLA 2, my question is, why are government hospitals in such a bad situation? Why is the government not appointing proper doctors? I would also like to know how the government plans to deal with the situation. So, केमती क्वेश्चन आंसर करा जाए, केमती MLA माने क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करती, कौन कौन हुए तो क्वेश्चन डिबेट केमती हुए तो गोटे पर्टिकुलर क्वेश्चन द्वारा आसिला फंक्शंस ऑफ एन MLA सेटा आमे लिखि परिबानी कारण सेटा जदि आमे जानि नथिबा सेटा आमे सेते हठात लिखि परिबानी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन MLA कि भाईबा बस रे हला कि कोठी उठे पचा. सो एनसीईआरटी रो बेसिक जिंस हला कोन इट क्लियरली मेंशन्स द थिंग्स सो दैट वी कैन रिमेंबर. तो इट इज अ कन्वर्सेशन दिया जाइछि MLA 1 MLA 2 and MLA 3. My constituency in Talpati 2 has a serious shortage of water. Women travel up to 3 to 4 kilometers to collect water. Semti MLA 4 kouchi kono. My colleagues are exaggerating the problem. The government has taken steps. It is ruling party loko. Ruling party ro ye mane opposition party ro loko. ORS packets are being distributed. The government is doing everything possible to help people. So MLA 5 we have very poor facilities in our hospitals. MLA 6 empty coach there are unnecessary blaming the government. The previous government did not pay any attention. So these are the kind of discussion or question that take place in an assembly जोटा कि 7th class पिलांकु कुहाउची कि केमती MLA question answer debate हुए एवं that is the most important things that takes place in a legislative functions. So that is there. Can you identify MLAs of the ruling party and opposition party in illustration? तो उरा देछि एटा दर कोन opposition members त माने एटा ruling party members. So पिलानु कहिछि कोटा opposition आ कोटा ruling party members एटा ठीक अछि. तो पिलाने एटा तो जानथिबे यूनिकॉर्न बैच रो कंप्लीट हवा को जाउछि आ किछि अल्प सीट अछि जो माने कांसेप्ट बेस्ड बा कंप्लीट कैरियर नवा को चाहूछ एथिरे तुम यू कैन जस्ट it is at present 470 if you consist. Originally it was 395
but now it is 470 if you count the other articles. ठीक अछि अब्दुल 470 हबो 470 approximate 470 around हबो किछ आर्टिकल तो डिलीट हेई परिबो. So in the earlier section you have read about debate of the legislature. The members were debating the actions taken not by the government. This is because MLAs are together responsible for the work of the government. In a common usage, the word government refers to government departments and various ministers who head them. The overall head is chief ministers. More correctly, this is called executive part of the government. All the MLAs who gather together in the legislative assembly are called legislature. They are the one who authorize, supervise their work. As you saw in the earlier section, it is from among that. So that is the functions. Working of the government. The legislative assembly is not the only place where the opinions are expressed about the work of the government. We will find newspapers, TV channels, other organizations regularly talking. Okay, so that is there. Soon after the discussion in assembly, there was a press conference organized by the health ministers. Large number of people from different newspapers were present. The minister and government officials were also present. The minister explained the steps government had taken. Reporters had asked many questions at this meeting, this discussion. So that is told about the press conference. So what is press conference? What is press conference? That may be a question. Role of press conference in society. Role of press conference in government, functioning of the government. Okay. Okay. So these are the questions that you have to answer. During the next week, the chief ministers for health visited Patalpuram district, that is the result. So that way the government smells the garbage. During the last few weeks there have been. So write two measures that government underwork for controlling diarrhea. What is the purpose of press conference? How does the press conference help you get information? What government is doing? So ये जो लिटिल बिट जिनस गुड़ा देइछे सेगुड़ा जदियो डायरेक्टली क्वेश्चन रे 7th क्लास रो न आसी पारे किंतु सेटा कोड ना कोटी हमकु गोटे कन्वर्सेंट गोटे पॉलिटी रो भास्ट एरिया पर हम परिचित करिवो सेटा हमकु देखियो पड़ियो कारण ए पेपर ए क्वेश्चन गुड़ा धर एटी अछि जो क्वेश्चन गुड़ा लिखि दबा जो माने बेसिक आरंभ करछ जो माने बेसिक आरंभ करछ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए प्रेस कॉन्फ्रेंस. द पर्पस ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस इज टू acquaint the people with the measures taken by the government or with the issue affecting the society. So what is the purpose of press conference रे सेटा लिखाई परियो ठीक अछि. The chief minister also said that he thought the problem was not only of the sanitation. So that is the interaction जो area रे गोटे example देइछन से माने ठीक अछि. As you saw above, the people in power like chief minister, ministers have to take action. They do so through various departments like public works department, agriculture department, health department, education department. They also have to answer questions they are asked in legislative assembly, convince people, asking the question that proper steps are being taken. At the same time, newspapers and media widely discuss the issue and government has to respond, for example, by holding press conference. So these are the elements that the house of seated. The government can also decide to make new laws. So these are the functions. Decide to make laws, it may make compulsory for municipal corporations. And government have to take action. What are the function of the state government? And state government's function is to cater to the basic services. Basic services gura jo diya hochi. To jodi egura basic directly हमको impact पकेबनी किंतु हमें जेतु class wise करूचे तेनु सबु जिनस गुरा कोड ना कोड धरा पड़ जिवो. तो मेजर जिनस ला functions of government जदि हमें कहिबा functions of government तो हमें थ्रू कौन functions of government पाइले ना to provide basic services. To provide basic services like health, education to people, it would measure jinns এবং it would measure jinns and to attend people's grievances
तो सब चैप्टर गुरा शॉर्ट रे हमें कहले द गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइड टू मेक लॉज टू मेक लॉज गवर्नमेंट रो काम सीटा स्टेट गवर्नमेंट रो to make laws for the states. In a democracy, it is the people elect the representative members of legislature. It is the people who have the main authority. The ruling party members then form the government, and some members are appointed ministers. These ministers are in charge of various departments of the government, such as health. Whatever work is done in this department has to be approved by the members of the legislative assembly. ठीक है? So these are the gist of the things. These are the gist of the things that are provided. ठीक अच्छे तो जदिव यहाँ शॉर्ट चैप्टर रोचे आमर यहाँ बेसिकली जोटा आम कहूचे कि फंक्शन सो प्रति चैप्टर को पढ़ी की तार जो जिस्ट गुरा गोटे खातार नोट्स कर नौ जमी मुझे लिखीदी व्हाट आर द फंक्शंस हु इज एन एमएलए धर हु इज एन एमएलए इज ए पर्सन हु रिप्रेजेंट्स ए कॉन्स्टिट्यूएंसी or an area, and he is a member of the legislative assembly. He represents the people. He makes presentation of the people's grievances of his areas. He also, what is the dual role? What is the dual role of a minister, of a dual role of an MLA? So जो माने हमरो सरिला परे चैप्टर सरला परे जो क्वेश्चन रो जिस्ट गुरा एनसीईआरटी खाता रे लिखि देवा दरकार कि व्हाट इज द डुअल रोल ऑफ एमएलए. द डुअल रोल ऑफ एमएलए इज दैट ही एक्ट्स एज ए एमएलए एंड आल्सो एक्ट्स एज ए मिनिस्टर. तेणु एमएलए बिकम्स ए मिनिस्टर. एंड व्हाट इज ए रूलिंग पार्टी? द पार्टी which gets majority of members in the assembly is called ruling party. And the party which other than the ruling party is called opposition party, and ruling party can be a single party or a coalition of parties. So ये जो concept गुरा जो माने पॉलिटी पिला से तो आर गुरा किसी विशेष दरकार होबनी बट जो माने नॉन पॉलिटी पिला आरंभ करछन्ती सिविल कैरियर एतमे एनसीईआरटी रो बहुत फाउंडेशन अछि जोटा कि तुमे जो सो कॉल्ड गाइड बही रे पाइबनी जो सो कॉल्ड जो सिविल पे जो बही मिलुची पॉलिटी ताको डायरेक्ट पढिले सेटा जेमतेले कंफ्यूजिंग हबो कारण एगुरा सबटी बुझियाउ पड़िबो कि लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर कोन गवर्नमेंट रो कोन रोल रहउची व्हाट इज ए गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट आमे कहूचे से काहा को बुझाए विभिन्न डिपार्टमेंट को बुझाए विभिन्न जो गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर एमान को बुझाए तो सही जो जिस्ट गुरा खातारे लिखि देवा दरकार जोटा कि तुमको बहुत हेल्पफुल हो. तेणु जो चैप्टर आमे पढ़ुचे ताकू रिव्यू करिकी सेगुरा जिस्ट गुरा तुम जदि खातारे लिखिदेल सेटा तुमर फाउंडेशन तोड़िया पे बहुत सहज हम कारण डायरेक्ट जदि आमे जो जाऊचे बही मान को जो पॉलिटी दर सिविल मु पढ़ी आ को बही आनिबी जो पचारचु से जो मिलूची सब तुमर कौन से जो गाइड बही सब लक्ष्मीकांत है ये है एगुरा सब कौन एगुरा तुमको डायरेक्टली हेल्प करबनी एगुरा कोड ना कोड तुमको कन्फ्यूज कर. तेणु जो स्ट्रक्चरल पार्ट फंक्शनल पार्टा एनसीईआरटी रु बेटर कवर हम तापर हायर लर्निंग को आमे जाई परिबा. तो यहाँ आम क्लास 7 रे इजी लगुच जो क्लास 8 को आसो आउ टे डिफिकल्ट हम क्लास 9 आउ टे डिफिकल्ट आसो क्लास 10 फाइनल पॉइंट रही आम 11 भी करिया बिली मु भावी. ठीक अच्छे. सो दिस सीरीज विल कंटिन्यू जेहेतु एबे ओपीएससी रो ऑलरेडी मेंस पई टाइम आस जाई पिलाने तो नेक्स्ट 2-3 वीक्स आम से मेंस रिलेटेड सब सेशन गुरा करी इंग्लिश जनरल इंग्लिश रो पॉलिटी रो किछ क्वेश्चन आंसर सेशन एवं एगुरा सब से एनसीईआरटी क्लास हुए तो किछ दिन एटा को पुट अप रखा हो किंतु आई हैव डिसाइडेड टू कंटिन्यू एनसीईआरटी क्लासेस अप टू क्लास 12 पर्यंत जिते क्लास अच्छी सब जाक मु करी से धीरे धीरे आम करवा गोटे गोटे चैप्टर नौचे कारण जेहेतु यूट्यूब सेशन अच्छी आज शॉर्ट चैप्टरटा थिला तो से तो यहाँ ये जो एनसीईआरटी रो जो मेजर जिनस गुरा रोचे तुम्हें निजे भी कैप्चर कर
किंतु ताकू जिस्ट कर दबो प्रति खातार चैप्टर प्रति चैप्टर धर चैप्टर 7 लिखि देल क्लास 7 चैप्टर 3 जिस्ट एतिक लिखाला व्हाट इज गवर्नमेंट हु इज एन एमएलए हु इज ए रूलिंग पार्टी हु इज एन अपोजिशन पार्टी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एमएलए एगुरा से लिख देल बस चैप्टर सरला एटा कोन आधा पेज रे हिची जो पेज बड़ हम से बड़ हम तेणु यहाँ रही कौन ताकू रिविजन कले सेटा धीरे धीरे तुम फाउंडेशन टा गढ़िया सुविधा ठीक अच्छे पे कहीं यहाँ तुम्हें बेसिकली तो कौन आम जो सिविल जाऊे आम जो बही रेकमेंड कराऊे आम से किन दौचे पढ़ुचे डायरेक्ट आम पढ़ाऊे धर जो आम साइंस बैकग्राउंड आउचु कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आईचु तो आम जो डायरेक्ट से जो लक्ष्मीकांत है कि से जो जहाँ जहाँ सब गाइड बही मिलूँ से गुरा जो आम धरी पकाचु आमको टे अक्वार्ड फिल हो बुझीपारनु से फर्स्ट तो धर जो पॉलिटी है कि पॉलिटिकल सिस्टम कौन एमएलए कौन एमपी कौन चीफ मिनिस्टर किए प्राइम मिनिस्टर किए तार कौन कौन सब इश्यू रोचे बेसिक जिनस गुरा गोटे एमएलए कौन रिप्रेजेंट करे एवं ये जो कन्स्टिट्युएंसी कौन ये कन्स्टिट्युएंसी किए निर्धारण करे का द्वारा कन्स्टिट्युएंसी एरिया निर्धारित हुए केते पॉपुलेशन रहिबे बोली किए कहे पार्लियामेंट कौन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कौन रूलिंग पार्टी कौन अपोजिशन एगुरा कौन आम डिफाइन करें जदि आम एटा पढ़ी नथिबा जदि आम जानि नथिबा ताले आम केबे डिफाइन करें कारण सेटा कौन हम ना तुम माइंड रू सेटा जर्किंग हम सब डायरेक्ट जिते तुम गाइड बही पढ़ाऊच पॉलिटी मोटा बहीटा खोली दौच तो सेटा कौन तुमको कौट ना कौटी से तुम गोटे सेन्स ऑफ फियरनेस गोटे जात्र होची कि ना ये पाठ मते हबनी कि पारिबिन एवं सेटा इंटरेस्ट भी आसबनी कहीं ना तुम कॉन्सेप्ट क्लियर ना तुम्हें जो प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट क्लियर रहा कथा सेटा कॉन्सेप्ट क्लियर ना तेणु से तुम कौन धर फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट तमाने रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रे आमे देखुचे मेन है कौन टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज टू पीपल स्टेट गवर्नमेंट रो काम कौन लोकों को मौलिक सेवा जोगे दिए जीवा शिक्षा स्वास्थ्य सेवा ये जो जिनस गुरा सब जोगे देवा कथा तेणु सेटा ये जो जिनसटा कौन यहाँ आम हठात गेस करें हठात निज माइंड को आनी पार एवं कौन गाइड बही रे जो मैंने सिविल जो बही तैयारी करी बिक्री होची से तुमको एक कथा केबे सी बुझेबेनी सी सिलेबस अनुसार जहाँ सब दवा कथा देदेवे किंतु जो बेसिक पार्टा को केमती आम चेक करवा बेसिक पार्टा केमती चेक करवा तेणु बेसिक पार्टा चेक करने आमको स्टेज बाय स्टेज एनसीईआरटी देख जावाक पड़ो एंड दैट इज वेरी वाइटल that is very vital unless you do that you cannot have a command over that topic take example of polity geography history whatever another characteristic of NCERT which it is very convincing you can understand it well they are giving examples जेमते में देखुचे एग्जांपल दउची विभिन्न प्रकार पिक्चर राइजर करी बुझौची तेनु गोटे छोटो पिलाडा जदी बुझ जाउची आमे एते बड़ बड़ हलेनी काई बुझ परिबे आराम से बुझे तेणु से आमको खाली देखा दरकार कि आमको से लेवल रे आमको रहीकि सेटा को कौन ये करिया पड़ो देखा पड़ो जाना पड़ो कि यहाँ कौन यहाँ यही जिनसा ये दरकार एवं तार सेपरेट नोट प्रिपेरेसन भी दरकार नोट प्रिपेरेसन कर ठीक अच्छे ना तेमती आम एनसीईआरटी आनिबा जेहेतु एबे ओएस रो बाहर मु जो कहली तेणु ए वीक रे ओएस मेन्स विभिन्न प्रकार व्यवस्था रहिबो इंग्लिश जनरल इंग्लिश रो क्लास रहिबो आउ किछि पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चंस गुरा सब रही पारे ठीक अच्छी सो दिस इज द शॉर्टेस्ट चैप्टर थिला इटा तेणु आम जल्दी छाड़ देले जहाँ भी तुमरो जदि 48 बट इन गूगल इट इज शोइंग ना 448 हबनी what is the consequence behind it see there have been many articles added এটা जो 395 है हमर कौन अब्दुल 395 है हमर लास्ट आर्टिकल किंतु आम धर केते आर्टिकल ऐड होइछि धर 51 ए ऐड है केते देखिबो तुमे बहुत सारा आर्टिकल ऐड होइछि 51 ए जो धर 106 अमेंडमेंट ऐड कला मोटे एग्जांपल दउछि धर मु कहूछि तुमको धर बेसिकली जो देखिबो धर ओरिजिनल आर्टिकल है केते ओरिजिनली
originally it is 395, but at present it is around 470. बहुत सारा बही भी देइछ तो केमती धरा जो एबे हमर जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2023 जो वुमेन रिजर्वेशन इतरे केतले आर्टिकल ऐड हला 330 ए 332 ए 334 ए तमने तीनटा प्लस हला ना आर्टिकल टा ए तीनटा प्लस हला ना एटा प्लस हला ना तीनटा जाक आर्टिकल ये तीनटा जाक आर्टिकल कौन हला प्लस हला ये भी इंडिविजुअल आर्टिकल ना जेंदा हमें कहूछ धर 51 ए और 51 ये दीटा आर्टिकल ना नहीं इंडिविजुअल आर्टिकल ये क्लॉज नो सब आर्टिकल नो कथा बुझी पार्छ ना एटा जो जो 330 ए गोटे आर्टिकल त माने 330 रो ए गोटे आर्टिकल 330 ए भी गोटे आर्टिकल 332 गोटे आर्टिकल 332 ए भी गोटे आर्टिकल 334 गोटे आर्टिकल 334 ए भी गोटे आर्टिकल जेंते में देखुचे धर 338 ए 338 बी तमाने 338 टा कौन नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 ए टा कौन नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और 338 बी टा कौन नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तो तीनटे देखो अलग हलानी एट तो तुम्हें 6टा आर्टिकल पाई गलो 8 तो 6टा आर्टिकल अब बहुत सारा आर्टिकल ऐड होइछ 448 गूगल कथा नुह मेजर होची 470 अराउंड अच्छी 470 अराउंड हम आर्टिकल्स गुरा कारण बहुत सारा आर्टिकल आड़ 40 सेकेंड रे एका थर के 50टा आर्टिकल आड़ होता 40 सेकेंड रे तेणु अमेंडमेंट लिस्ट जो देखिए जापर अमेंडमेंट गुरा जो लिस्ट देखिए अमेंडमेंट विकिपीडिया रे अच्छी विभिन्न जगार अच्छी जो देखिए से देखिए पाखापाखि माने बहुत सारा अमेंडमेंट आर्टिकल आड़ प्रति वर्ष प्रति पीरियडिकली आर्टिकल ऐड होउछि तेणु 395 आर्टिकल ओरिजिनली थिला बट इंटरेस्टिंग कौन ना 396 आर्टिकल किछि नाही कथा बुझी पारछन ना 395 आर्टिकल थिला वर्तमान आम कहूचे 470 पाखापाखि धारा आर्टिकल हेलानी किंतु 395 आर्टिकल 96 किछि नाही ताल केमती होला ना सब ए बी सी डी ऐड होइछ अच्छा आ गोटे कथा देख 243 जो आर्टिकल 243 गोटे आर्टिकल थिला 243 गोटे आर्टिकल थिला एतरे केते पडिछ माने एक तो 243 रु ए रु ओ तापरे ओ रु ए पी रु सॉरी पी रु जेड जी जेड एच रु जेड टी ये केते हलानी ए जो पंचायत राज म्युनिसिपालिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये पूरा हो गलानी ए रु 26 पुणे टा 40-50 टा हो गलानी तेणु 395 रु 448 केते डिफरेंस 395 रु 448 केते 53 टा एटी पूरा 26-27 टा हो गलानी 40 सेकेंड रे पूरा 50 टा खंडे ऐड होइछि तेणु 448 केमती हम ठीक अच्छे तो 448 हेनी क्या ए धर जो पंचायत राज 243 टा पूरा कौन ए रु ओ आड कला पी रु जेड जी रु जेड टी तो ये पाखापाखि के 50 टा हो गला तो सब स्पेशल आर्टिकल ना कथा बुझे ये भी सब स्पेशल आर्टिकल तेणु 395 होटा ठीक है 470 448 ठीक हे ठीक अच्छे ओके सो एमती आम आनिबा बहुत सारा जिनस 53 हाँ 53 हो गलानी तेणु ये 53 है सी 53 50 आड होता 40 सेकेंड रे 40-50 टा आड होती तेणु 470 टा ठीक
470 पाखापी कारण कि आबोलिश भी कि धर 31 आबोलिश बहुत सारा आबोलिश बहुत सारा डिलीट हो तेणु से भी देखिए 238 आबोलिश बहुत सारा आबोलिश ठीक अच्छे तो आबोलिशन पर जी आर्टिकल अच्छे आम गणी कहे जे मोर देन 470 आर्टिकल्स बट द नंबरिंग एंड्स विथ 395 नंबरिंग टा 395 रे ऐड होइछ ठीक अच्छे नंबरिंग टा 395 रे लास्ट तापर नंबरिंग नहीं 396 नहीं किंतु जदि आम गणिबा आर्टिकल्स की जदि गणिबा आम आर्टिकल्स की जो ये गुरा देखिबा ताले आम कहूचे 470 टा आर्टिकल अछि बुझियला ठीक अच्छे ओके थैंक यू वेरी मच to all of you. Stay healthy, stay happy, stay successful. God bless you. Vanita, Sasirekha, thank you very much to all of you.